ओहो, पंजाब की लस्सी पी के तो स्वाद ही आ गया। बट अब राजस्थान के दाल बाटी चूरमा की बारी है। मम्मी जरा बना देना यार डिनर में। So till our dal bati churma gets prepared, I welcome you all to another episode of We Roll Together with your new host and host तन्मय फब्रानी। तो आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पिंक पिंक कलर के राजस्थान के सुपर रॉयल्स और हमारे साथ होगी डीसी की टोली। तो लेट्स स्टार्ट द शो विदाउट एनी देर। तो करना परेशान हो गए हम लोग ढाई। पंजाब को तो हरा के दिल्ली के शेर आ गए हैं, अब राजस्थान के रजवाड़ों की बारी है। जॉस बटलर का फॉर्म बिल्कुल ही खतरनाक सा हो रखा है, लेकिन हमारे कुलदीप भी कहाँ कम है। सो वी हैव राजस्थान रॉयल्स के फैन जिनको हम सुपर रॉयल्स कहते हैं, और दिल्ली कैपिटल से हमारी डीसी टोली एज यूजुअल हमारे साथ है। सो वी हैव सैंडी पाजी और संचित फ्रॉम द सुपर रॉयल्स कैंप, एंड फ्रॉम द डीसी टोली वी हैव कुशाग्र एंड रिदिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग ऑन टू सैंडी पाजी। पाजी, जॉस का फॉर्म तो मतलब इतना तगड़ा हो रखा है कि क्या ही कहने। सेंचुरी मार चुके हैं दो दो। ऑरेंज कैप उनके पास है, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के पास है। मतलब कैसे क्या रोकेगी दिल्ली? क्या लग रहा है आपको, एक और 100 ऑन द कार्ड्स या फिर कुलदीप की फिरकी के आगे जॉस फंस सकते हैं? कालू कुलदीप ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਜੋਸ ਖੇਡੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਂਕੇਟੀ ਸੰਚਿਤ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਂਕੇਟੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਸ ਓਪਨਰ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼, ਖਤਮ। ਭਾਜੀ ਲੱਡੂ ਖਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗੇ। बस इसी तरह जॉस के आउट होने के बाद राजस्थान की बैटिंग खत्म हो जाती है थोड़ी सी। देखो तो रिद्धिमा की तरफ चलते हैं। रिद्धिमा, हमारे ओपनर्स अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब मैच ही उन्होंने पंजाब का खत्म ही कर दिया, आगे किसी की बैटिंग ही नहीं आने दी। बट युजवेंद्र चहल राजस्थान के कैंप में है, अश्विन हमारी तरफ से उनके पास चले गए हैं, हेटमायर उनके पास चले गए हैं। तो हाउ इज द बैटल लुकिंग? मतलब एक्स डीसी प्लेयर्स ही हमारे खिलाफ वार तो नहीं कर देंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमने XTC प्लेयर्स को अभी तक फेस नहीं करा है, हमने फेस करा है एंड वी हैव बीन विक्टोरियस इन अ फ्यू मैचेस एंड ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, हमारे पास अब रिप्लेसमेंट्स भी है एंड आई वुड से वी आर अ नॉच हायर विद खलील एंड कुलदीप विद अस नाउ। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच टुमारो एंड हियर्स टू विनिंग। नाइस। संचित की तरफ चलते हैं। संचित, मेरे को लग रहा है काफी दुखी थे जब मैच शिफ्ट हुआ, वो पुणे जा रहे थे, पर नॉनदलेस अब वानखेड़े का भी प्लान बन गया है। संचित, सो हाउ इज द पिच डिफरेंट? मतलब क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या एडवांटेजेस होंगे दोनों टीम्स के लिए? आई थिंक तन्मय द डिसएडवांटेज फॉर बोथ द टीम्स विल बी ड्यू, तो टॉस फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पुणे में भी सी कि इवन आफ्टर लूजिंग द टॉस टीम्स हैव डिफेंडेड वेल। तो यहाँ पे वानखेड़े में मुंबई की ड्यू काफी तंग करेगी, सो टॉस विल बी क्रूशियल। तो संजू सैमसन का लक इस साल तो काफी लेट्स से अनलकी हुए, बट गुड फॉर अस दैट वी हैव एक्चुअली won the matches while defending, but this time I think it will be very interesting because Delhi Capital जो उन्होंने करके दिखाया against Punjab Kings, so I think it was something unusual because सबको लगा कि Delhi Capitals will be hit by COVID outbreak and they will be we really don't know what to expect from them, but they actually they dominated that game pretty well. So ये जो match रहेगा it is going to be very very crucial in terms of points table, तो काफी excited है and as compared to the previous seasons of Rajasthan Royals की team, ये team काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो होपफुली दैट वी लिव अप टू द चैलेंज एंड इट्स अ बिग गेम फॉर बोथ ऑफ अस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज संचित मेंशन, मतलब ये डीसी का प्योर डोमिनेंस कहते हैं ना, मतलब एक पल भी नहीं लगा कि पंजाब मैच में थी। कुशाग्र की तरफ चलते हैं। कुशाग्र, ये डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगी क्योंकि आरआर तो पंजाब से मतलब अभी तो मुकाबला कोई है नहीं, बट आरआर इज अ टफ टीम। जॉस है उनके पास, युजवेंद्र चहल है, बीच में हेटमायर आ जाते हैं, तो काफी तगड़ी टीम है। बट दिल्ली वाले भी थोड़ा कोविड आउटब्रेक से जूझ रहे हैं। क्या लगता है, इट्स ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन, सो हु विल बी विनिंग द बैटल? क्योंकि अभी तक दोनों के रन्स थोड़े से कम ही आए हैं, मतलब बट देखते हैं क्या होता है। दोनों कैप्टनसी कर रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है। सो हु विल बी विनिंग दिस बैटल, कुशाग्र? आई मीन ऑफ कोर्स एज अ दिल्ली फैन मैं तो चाहूंगा ही दिल्ली जीते, बट मतलब राजस्थान की द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ जैसे उन्होंने अपनी टीम कॉम्पोजिशंस बनाए हैं, जो प्लेयर्स उन्होंने ऑक्शन में लिए हैं, इट्स बीन वेरी इंप्रेसिव एंड टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट साइड्स लग रही है इस समय आईपीएल में। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दिल्ली विदाउट डाउट, एंड एज संचित सेड
it's a little bit of an unfair advantage for because toss is deciding a lot, especially in Mumbai. And जितना ड्यू गिर रहा है, लिटरली जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, स्विमिंग पूल में खेलने टाइप हो जाती है बात. एंड एक बार जो when the ball is that wet, it could actually negatively affect the spinners of the team जो भी second ball कर रही है. So it toss will be very important. Let's hope Rishabh calls it right. And थोड़ा सा तुक्का ही रहेगा वो. But all in all, I have faith in our openers. They've been fantastic. Even if we end up defending a score, if we can get one of the two to stick out for say about 15 overs or so, then it will become difficult for Rajasthan nonetheless. मतलब 180 200 के आसपास का score, which is what I'm hoping for at least, because you need a buffer of 20 or odd runs, at the end when you're bowling second. So let's hope DC does it, but it won't be easy. It won't be easy at all. And especially Josh Butler, man. I don't know क्या खा के आए हैं वो, but सेंचुरी पे सेंचुरी हद हो गई है. Yeah, as Kushagra said, it won't be easy. मतलब डेविड वार्नर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि उनके किड्स देख रहे हैं जॉस बटलर को और वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सेंचुरी क्यों नहीं मार रहे हो. तो आई होप वो सेंचुरी भी इस बार आ जाए. तो हमने थोड़े मीम्स ढूंढने हैं पिछले मैच से और ओवरऑल आईपीएल से. तो लेट्स हैव अ लुक एट द मीम्स and we have a special show called We Meme Together for this. So look at the first meme. It's Bapu versus Shikhar Dhawan. ये मोटेरा पिंक बॉल टेस्ट चल रहा है क्या? टेस्ट बॉलिंग क्यों कर रहा है यहाँ पे संचित? मतलब क्या लगता है यार, मोटेरा ही बना दिया था बापू ने कल. अभी तक विकेट्स नहीं थी बट कल 4 overs 10 for 2, मतलब काफी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था. Yeah, definitely. I mean, especially जब बापू जॉनी बेस्टो की तरफ आए थे, like that competition, मुझे वो मैच याद आ गई पिंक बॉल वाली. The way how Johnny Bairstow played that spell of not just Johnny Bairstow, पूरी इंग्लैंड की टीम को उन्होंने कर दिया था. तो होपफुली वानखेड़े में ऐसे ना हो for us. So काफी एक्साइटिंग मैच रहेगा वो. Yeah, moving on to our next meme. ये this is from the 83 movie. मैं मारू या तू मारेगा, and शॉन वार्नर भी like एक काम करते हैं, दोनों मारते हैं. सैंडी पाजी, क्या लग रहा है ये जॉस बटलर हो जाएंगे एक तरफा, दोनों को कॉन्कर करेंगे या शॉ वार्नर भारी पड़ेंगे? Definitely got to be Josh Butler because Prithvi Shaw's and what's his name, Warner. Josh Butler will combine his score with what they will get. Even if they get 250s, Josh will still get 100. So there's only going to be one winner there, and it's Josh. And I think the big problem is, again, with you guys, is you rely too much on them. We've got Hetmai in the bottom. Hetmai badla hoga because you should have got him back, and we've got him now. Yeah, देखते हैं हेटमायर क्या करेगा. अब थोड़ा कुशाग्र ये देखिए हमारे खलील यादव, जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कहूंगा ऑक्शन से. सो व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, किसी ने सोचा नहीं था फ्रंट स्टैंड अप बॉलर होंगे. सो हमारे किरण कुमार गांधी सर ने उनको ऑक्शन में पिक किया था या कहें जबरदस्ती मिल गए थे, बट व्हाट अ शो ही हैज पुट ऑन मैन. नहीं, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स यार. आप देखिए पिछले कपल ऑफ सीजंस से मे बी इवन मोर, खलील को जब उनको इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, I know a lot was expected out of him, but in last couple of seasons he's not been good. He's not, his performances have not been that great, and he wasn't even being regularly picked by his own teams earlier, whether it was Sunrisers or anyone else. So he's come back very well. It's not just Khalil. I think Mustafizur has really accounted for some really good bowling. And आपने अक्षर की बात की, मेरे हिसाब से कल के मैच में of course अक्षर के that was a game changing spell because 2 wickets and those 2 important wickets up at the top of the order. So I think जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, हमारे पास लेफ्टीज का जो कॉम्बिनेशन है, सारे ऑलमोस्ट लेफ्टीज. So because you got Khalil, Kuldeep, and of course Akshar and Mustafizur. So hoping कि कुछ ना कुछ उस साइड से मतलब कुछ फायदा हो जाए वानखेड़े में. सो फायदा तो हो ही जाएगा. और अब डेविड वार्नर, कुलदीप यादव, मतलब लास्ट ईयर बेंच वार्मिंग पे चले गए थे लास्ट में, एंड दिस ईयर मतलब यार क्या ही कहने रिद्धिमा, हमारी टीम में सूट कर रहे हैं डेविड वार्नर, कुलदीप यादव. क्या लगता है? Yeah, actually, I think जब से हमारी टीम में आए हैं, they're like, this is our redemption, and this is the one time or the opportunity that we get to show कि form is temporary but class is permanent. So yeah, it's really nice to see them playing so good. Yeah, form is temporary, class is permanent. And coming on to our next segment, we wrote together Fantasy 11 बनाएंगे हम.
थोड़ा सबको हम थोड़ा मौका देते हैं कि यहाँ से आप अपनी फैंटेसी 11 चोरी कर सकते हैं लिटरली। हम कोई पैसों वैसे का शेयर नहीं मांगते, यू कैन विन इट, इट्स ऑल योर्स। सो हम वी रोड टुगेदर फैंटेसी 11 की तरफ चलते हैं। संचित, मैं तो कह रहा हूँ यार, एक जॉस और डेविड वार्नर स्टार्टिंग में और कुलदीप और चहल एंड में। इसके अलावा बताते हैं 7 प्लेयर्स हमारे बच गए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू। या तो ओपनिंग तो आपने बता ही दी, तो देयर इज नो डाउट, बट इट्स रियली हार्श ऑन पृथ्वी शॉ एज वेल, बिकॉज वो भी है। तो इफ किसी फैंटेसी प्लेयर को दे वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सेविंग दैट ओवरसीज स्पॉट फॉर इन द मिडिल, तो शायद वो एक पृथ्वी शॉ के साथ भी जा सकते हैं, आइदर वन ऑफ वार्नर और जॉस। बट मिडिल ऑर्डर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज it's difficult to fit both Pant and Samson in, so you have to choose one. So knowing Pant's record against Rajasthan Royals, I think he has an average about 50 and he really enjoys playing against us. So इसीलिए मैं पंत के साथ जाऊंगा in that number 3 और number 4 role. And somewhere down the line, I feel कि ये मैच काफी important रहेगा for someone like ललित यादव in that middle order. So we saw that Mumbai Indians के सामने उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी in that run chase. So Lalit Yadav will be in that lower middle order phase. And Rajasthan Royals से अगर मैं बात करूँ तो रियान पराग, आई एम होपिंग दैट ही कम्स गुड, एंड फिर उसके साथ साथ शिमरॉन हेटमायर विल बी द फिनिशर। तो ये मेरी बैटिंग ऑर्डर रहेगी। ये बैटिंग ऑर्डर मिडिल का संचित ने बता दिया है। लोअर की तरफ चलते हैं, और सैंडी बाजी लॉर्ड पराग का जिक्र हुआ है, मतलब पूजा काम नहीं कर रही है इतने मैचेस से आपके लिए। क्या कहना है इस बार बॉलिंग में बैटिंग में चलेंगे पराग? और 2 फैंटेसी पिक्स भी बता दीजिए अपनी। Pandit ji na gala hui hai, Parag will be on perfect fire tomorrow, and Bihu, a couple of Bihu dances will be out. So whether he's in the field because he's catching very well, or his batting and bowling isn't there at the moment. So I don't think he will be bowling tomorrow, because I think the big thing for us is the bowling. I think the bowling is the big part for us. So yeah, for me, I would probably have Samson and Pant as batsmen and Hetmaya. I think Shaw is too dodgy for me. So I'd rather have Samson and Pant in together with Hetmaya in my top 6. Yeah, but Joss and Warner definitely will be batting. ओके, कुशाग्र, 2 पेसर्स कौन लगता है फैंटेसी 11 के लिए? देखिए, हमने अभी खलील की बात की, तो आई थिंक इट विल बी अ सेफर बेट बिकॉज ही हैज द नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स एज वेल। सेकंड पेसर का मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, बिकॉज I'm thinking that we should ideally go for a Rajasthan pacer, because थोड़ा सा balance out करना होगा हम लोग को भी अपना team, because you can't have so many Delhi bowlers. So I would actually like to ask Sandy sir कि आप बताइए, who would you think would be a better pacer to select from the Rajasthan squad? ये मेरे होस्ट की पोजीशन भी छीन ली है कुशाग्र ने, तो नहीं, मैंने एक पिक किया कि एक अपना डेफर कर दिया। It has to be both. It has to be both, because I said, out of all the bowlers, I said I wanted us to get Fizz back. I'll be saying, I said it in my prediction that we should get Fizz back for 2 crore was a complete steal. And then you've got Chetan Sakari on the bench as well, and something. Yeah. He was our main bowler in the last couple of years, and he can't get into that team because Khalil's form is so good. So whether you go in for a Krishna, it depends on the combination. If you want to go for a right armer and a left armer, then you'd go for Krishna, and obviously Khalil or Bolt. I think Bolt is probably the best out of all the bowlers for both teams. I think Bolt is, you get the consistency in performance, you get economy, and you get the wickets as well. Whereas Khalil is performing better than anybody had thought. I know he should be playing for Mumbai Indians because you stole him from them. But the auctioneer stole him from them. But at the end of the day, I think really on form, I would probably take Khalil over Krishna. So I would say Bolt and Khalil as my main strike bowlers. I think he's happy he was stolen by DC. Yeah, maybe. He's from Rajasthan, isn't he? Khalil is from Rajasthan. Yeah, he is. From Rajasthan, yeah. So he should go home. For the Fantasy 11, एंड हमारी नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि होगा फैन बैंटर बिटवीन डीसी की टोली एंड राजस्थान के सुपर रॉयल्स। तो सैंडी पाजी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, 30-second फैन बैंटर। Well, we are now the form team. You've lost all your best players. They've deserted the ship. You've been left with cough syrup, Prithvi Shaw. COVID chalu hogi Delhi che. I think Prithvi will be safe in Delhi, and with the way we are batting, we have a superior batting and we have a superior bowling. Our spinners, Ashwin, he's come to us. Hetma has come to us.
So सब DC Toli fan, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਤੇਰਾ ਤੇ ਹੈ. It's a nice place to live. It's a better place to live. We have the Pink Palace. And tomorrow it will be Halla Bowl, and I will be having Laddu again, and I'll have some Chole Bhature for you guys. Okay, some spicy words from there. DC की टोली कौन कम बैक करना चाहेगा? रिधिमा, कुशाग्र? Come back to see, courage points were there due. Of course, Rajasthan had a fantastic season, but never count out the spirit of a man who's fallen down. COVID wasn't in our control. It happened, but you saw how we absolutely blew Punjab out of the water. आप भी हमारे northern rivals ही हैं, and going from the past record, it's not so bad. Sanchit mentioned, Rishabh's record against you guys. You never know. Josh की जगह ऋषभ मार दे century. We will see. We will see, but you have to remember one thing. This is a new Rajasthan Royals team. This is a new attitude from our fans. We've always been passive, but now we are confident. We are aggressive now. And even if we bat first, if we get a big score on the board, I think your middle order, that will come into face. Punjab were rubbish. Let's take it out. Punjab and down before the game. And we'll be ready tomorrow. We'll be on it. We've had an extra few days of rest and recuperation. And if we can bowl well, our death bowling, if we can get you out in the power play, if we take the 2 wickets in the power play, Delhi khatam hogi. Oh my God, ये पाजी ने एक्स्ट्रा इनिंग्स भी ले ली है थोड़ी. कम हो गया. तो वन लाइनर MVP प्रेडिक्शंस कौन लगता है क्या होंगे? हम सबसे पहले रिधिमा की ओर चलते हैं. रिधिमा, MVP फॉर द मैच. MVP for me would be David Warner, because I've seen him score consistently in all the matches. He's been getting his half centuries, and I really hope he gets his century this time. वाह वाह वाह, क्या बात है. बस ये जिंक्स नहीं होना चाहिए. हमारे जिंक्स किंग की तरफ चलते हैं. संचित, your MVP for the match. Am I allowed to pick a Delhi player? Yeah, करो. चलो दिल्ली प्लेयर ही ले लेता हूँ. तो थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन दैट जिंक्स में. तो जिंक्स की तरफ ही जाते हैं. तो आई थिंक रिद्धिमा ने डेविड वार्नर के बारे में कह दिया. आई थिंक आई एम गोइंग विद अ बॉलर. तो नोइंग वानखेड़े, इट रियली supports the spinners a lot. तो कुलदीप यादव तो काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, and it will be very interesting to see Cool versus Char rather than Cool Char together. So it will be a battle. So but I feel that Kuldeep will be the MVP for tomorrow's game. क्या बात है. अब ये जिंक्स हुआ तो कल संचित पे हम सारे बैश कर सकते हैं. सैंडी बाजी, आपकी तरफ चलते हैं. MVP, okay, definitely going to be Shimi. Yeah, so Shimi is going to take the score for us. We'll probably be 130 for 3, and then Shimi will take us to the 200. So Shimi for me. Wow, कुशाग्र. अब संचित ने जिंक्स किया है तो मैं रिवर्स जिंक्स करूंगा. I hope it's Josh. I can't wait for Khalil singing Yorker and just castling him. So never know. Oh my God. So हमारे 4 MVPs अलग अलग आए हैं. Let's see who becomes the MVP in the reality of the game. So thanks to the panelists. And अगर आप लोग भी join करना चाहते हैं, do comment and you can be one of our panelists. Thank you everyone. Thank you for coming. Hello, ball! Come on!